السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میاں والی ہوم ٹاؤن کی نشریات آپ پورے ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ میاں والی کا پہلا سوشل میڈیا پیج۔ اس وقت ہمارے ساتھ میاں والی کی نوجوان شخصیت، معروف نام میاں والی کے، ہم اگر نوجوان نسل میں سے پہلے اگر ہم انگلش کے رائٹر رکھتے ہیں تو یہ جانا ہوگا عاطف علی پروفیسر ہیں، سپیریئر کالج میں ایچ او ڈی ہیں، وہ انگلش کے سپیریئر کالج میں، اور ان کی 2 کتابیں جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہیں، دونوں انگلش کے جو ہے لینگویج میں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیم میں موجود ہیں ملک نوید احسن۔ نوید احسن صاحب جو ہے ایم فل جیو فزکس جو ہے وہ کر رہے ہیں، اقبالیات اور بیت بازی کے حوالے سے بزم طارق عزیز میں میاں والی کی اور لاہور کی اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ میاں والی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ بزم طارق عزیز میں انہوں نے شرکت کی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عبدالحمید انگلش کے جو ایچ او ڈی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سیفیہ کالج، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جہاں زیب سر سید اسکول میں یہ ٹیچر ہیں۔ مجاہد عمران کیمرے کی آنکھ کے ہے وہ پیچھے ہیں، آپ ان کا چہرہ جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجاہد عمران عالم ہائی اسکول میں جو ہے تدریسی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ عاطف علی ایچ او ڈی ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے، اور خوبصورت کتاب جو ہے ان کی منظر عام پہ آ چکی ہے۔ کتاب کا جو ہے ٹائٹل آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی 2 کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں۔ یہ جو ہے گرل ود اے بلیک امبریلا ان کی جو کتاب ہے، ان کے حوالے سے جو ہے آج خصوصی طور پہ ہم ڈسکشن کریں گے، انٹرویو کریں گے ان کا اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا، اور میاں والی میں اردو کے رائٹر بھی ہیں، سرائکی کے رائٹر بھی ہیں، تو میاں والی جیسے مضافاتی علاقے میں آپ نے جو ہے ایک انگلش زبان کو کیسے ترجیح دی، اور انگلش میں آپ نے 2 کتابیں اور گفٹ دیا میاں والی کو۔ تو سب سے پہلے سر عاطف علی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں وہ تشریف لائے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنائیں سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ تھوڑا سا ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور تھوڑا سا جو ناظرین ہیں جیسے ہم نے پوسٹ لگائی تھی پہلے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ لکھنے کا شوق بچپن میں ہوا، بعد میں ہوا، تو ابتدائی تعلیم سر آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی میں پریپ سے لے کر 8 کلاس تک سوسائٹی پبلک ماڈل اسکول میں پڑھا ہوں۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کی ہے عالم ہائی اسکول سے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ عالم اسکول سے ہی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج میاں والی میں ایف ایس سی کی پری انجینئرنگ میں، اس کے بعد میں نے بی اے کیا، اور گورنمنٹ کالج میاں والی سے ہی میں نے ایم اے انگلش کیا وہاں سے سرگودا یونیورسٹی سے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ، اور یہ میں نے اپنی تعلیم تقریباً میاں والی سے ہی حاصل کیا، اور مجھے ابھی تک یہی بات کہنے پر فخر ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ میاں والی کے ٹیچرز کی ہی وجہ سے ہوں۔ اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر ناصر اقبال کا، سر پروفیسر کھٹک صاحب کا، عبدالغفار کھٹک، اور سر عزیز اللہ، سر محمد صفی، اور یہ میرے بہت ہی بہترین ٹیچرز تھے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں انہیں ٹیچرز کی وجہ سے۔ اچھا، میاں والی جیسے مضافاتی علاقے میں رہ کر آپ نے جو ہے انگلش زبان کو ترجیح دی، ایک ویژن جو برائٹ جو جسے مائنڈ کہا جاتا ہے، ایک ذہن کی زرخیزی، تازہ دماغ جو ہے، آپ میاں والی میں رہتے ہوئے آپ نے جو ہے 2 کتابیں لکھی، حالانکہ جو کچھ ریگولر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو چاہے وہ لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، تو وہ اس طرح مشکل جو ہے اس فیلڈ میں نہیں آتے، اس ٹریک پر گامزن نہیں ہوتے، تو آپ کو کیسے شوق ہوا کہ کوئی آپ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اس طرف آئیں، یا آپ کو کوئی شوق ہوا، کسی سے آپ نے مشورہ کیا، کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے؟ جی سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انگلش زبان میں نے کیوں چوز کی، وہ اس لیے کیونکہ انگلش میرا سبجیکٹ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ جب میں انٹرنیشنل رائٹرز کی بات کروں، اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے رائٹرز ملیں گے جیسے کرن دیسائی، ابھیشیک نائک، اور اس طرح کے، تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ فیم حاصل کر چکے ہیں۔ تو جب ہم
पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में आपको एक या दो ही पोएट्स या राइटर्स ऐसे मिलेंगे जो कि इंग्लिश ज़बान चूज़ करते हैं अपने नावल्स के लिए, अपनी पोइट्री के लिए। उर्दू के आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको सराइकी लैंग्वेज हमारे जो दूसरी टंग लैंग्वेजेस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि इंग्लिश ज़बान तो शायद हम पीछे रह गए थे, लैग कर रहे थे। तो मैं ये चाहता था कि जो जिस तरीके से दूसरे मुल्कों के जो राइटर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर फेम हासिल कर चुके हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज को। अब मैं ये चाहता था मैं वही मीडियम चूज़ करूँ जिससे इंटरनेशनल आवाम तक मेरी बात जाए, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो शायद कोई लिमिटेड आप हो जाएंगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, आप अपना पैगाम दुनिया में दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं। तो सही मेन वजह यही है कि मैं अपनी किताबों के ज़रिए जो चीज़ मैं महसूस करता था, जो पैगाम मैं देना चाहता था, वो मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मैं नहीं ये चाहता था कि मेरी किताब से वही लोग पढ़ें जो सिर्फ उर्दू को समझते हैं या सराइकी को समझते हैं। तो मेन वजह मेरी यही है। अच्छा सर, जिस तरह इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, इस तरह इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। आपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात की तस्रीर हम तरसील जो है पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इस किताब में आपने क्या लिखा, इसका थीम क्या था, आपको ख्याल कैसे आया और कितने दिनों में आपने कंप्लीट की? थोड़ा सा जो है इस किताब के हवाले से तफसीलन जो है अपने जो नाज़रीन हैं उनको सुनना चाहते हैं, सामीन नाज़रीन, वो किताब के हवाले से रोशनी डालें। वो आपकी ये तकलीफ जो है बड़ी पसंद कर रहे हैं, वो तफसीलन आपसे जो है ना इस हवाले से गुफ्तगू चाहते हैं। जी सर। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये बताऊं कि ये किताब मैंने तकरीबन 22 दिनों में लिखी है, और 22 दिनों में बस मैं सिर्फ 1 घंटा ही इसे लिखता था, कोई ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज में टीचिंग करता हूँ, बाद में अकेडमी की इतनी मसरूफियात होती थी कि बस 1 ही घंटा मुझे 22 दिनों में मिला। अब मैं आपको बताता हूँ कि आइडिया कैसे आया मेरे जहन में। आइडिया सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी एक दरिया बह रहा है और उस दरिया के किनारे पर बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, और उन्हीं दरख्तों के दरमियान एक पोएट बैठा है और वो सारे मंजर की वो तारीफ़ कर रहा है। और फिर जब शाम होती है फिर परिंदे लौटते हैं उन दरख्तों पर, और वो शायर बैठा है उन दरख्तों के दरमियान, उस सारी खूबसूरती को वो अपनी शायरी में बयान करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये देखिए, मेरे जहन में सिर्फ वो तस्वीर थी, अब उस तस्वीर को मैंने एक्सपेंड किया, उस तस्वीर को स्प्रेड किया, और मैं ये चाहता था कि मैं अपने इमेजिनेशन से एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बनाऊँ। जैसे आप ये देखिए, पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, सैफुल मलूक झील है, और भी कितने खूबसूरत जगह हैं। तो मैं ये चाहता था मैं अपनी इमेजिनेशन से बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाऊँ, और फिर उस तस्वीर को मैं एक ऐसा राज में छुपाऊँ कि लोग जब उसको पढ़ें तो उनको ऐसा महसूस हो कि ये वाकई में कोई ऐसी जगह है दुनिया में। हालांकि जो किताब में जो जिस जगह का मेंशन है, जो जगह है ईस्ट, शायद ऐसी कोई जगह दुनिया में है ही नहीं। तो मैं ये चाहता था कि लोगों को इस किताब के ज़रिए पता चले, वो पहुँचे अपने ख्यालात के साथ एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जिसे आप इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक परफेक्ट दुनिया जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ पे सारी खुशियाँ हैं, और फिर वहाँ पर आप एक राज छुपा दें, और राज को भी आपने ऐसे बताना है कि लोगों को पता भी ना चले कि ये राज है। लोग ये बात समझें कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल ही सच है, और फिर अचानक से हकीकी दुनिया से आप उसे एक सुपरनेचुरल दुनिया में ले जाएं। तो मेरे जहन में यही ख्याल था, और इसी ख्याल को ही मैंने सामने रख कर ये पूरी की पूरी स्टोरी बनाई। और जहाँ तक ख्याल कैसे आया, ख्याल मैं आपको बड़ी इत्तफाकन ये बात है कि इत्तफाक सिर्फ एक पिक्चर ही थी मेरे जहन में, और उसी पिक्चर को ही मैं सामने लेता गया, उसी पिक्चर को ही स्प्रेड करता गया, और वहीं से ये कहानी खुद ब खुद बनी। अल्लाह करे कि अहले सादे को ये तस्वीर आवे। सर, आपके लिए अब बहुत सी दुआएं, आपने एक तस्वीर को देखकर आपने एक पूरी किताब लिखी। खुदा ताला आपकी और जो है सलाहियतों में इजाफा करें। अच्छा सर, एक और बात, इसी जो है
मौजू पे है, इसी ट्रैक पे है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है कि जो नए आने वाले राइटर हैं, चाहे वो शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, सफ़रनामा लिखते हैं, सर पब्लिशर जो मकामी हमारे हैं वो उसके साथ कैसा रवैया रखते हैं, कैसा बर्ताव रखते हैं, और जो ये देखते हैं कि हमने अपने पूरे महीने की कमाई जो है इस बंदे से हमने पूरी करनी है, और चाहे वो 10,000 की किताब 15,000 में छपती हो, 20,000 में, तो 50 से 60,000 उससे मांग लेता है। और तो मकामी जो पब्लिशर हमारे मियाँ वाली के, वो किस तरह आपके साथ उन्हें जो है बिहेवियर रखा, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं जी। वेल, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं फिर भी इसका आंसर आपको ज़रूर देना चाहूँगा। मैं ये बात ये समझता हूँ कि देखें, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। अगर एक पेंटर जो है एक पेंटिंग बनाता है, या एक जो मौसीकार है वो कोई धुन बनाता है, तो दुनिया की कोई दौलत उसके लिए काफ़ी नहीं है। मतलब कि अगर एक पोएट ने कोई पोएम लिखी है, आप उसको दुनिया की सारी की दौलत दे दें तो वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो एक आर्ट है। और आर्ट आके देखें, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा मिलता है। और जहाँ तक आपकी बात है रवैया कैसा है पब्लिशर्स का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके पास कोई न्यू पोएट आता है, कोई राइटर आता है, तो आप उसे इनकरेज करें। आप ये ना कि आप 10,000 या 15,000 उससे ज़्यादा ले लें, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे उसने कोई एक किताब पे उसकी फन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाना। और मैं ये बात ये समझता हूँ कि उसने आगे भी किताबें लिखनी हैं, उसके पास पैसे और भी आ जाएंगे। इमेज आप लोग अपना खुद ही ख़राब करेंगे, उस पोएट को या राइटर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ तक बात है एक पोएट या राइटर आपके पास आए, मैं पब्लिशर्स को यही हिदायत करना चाहूँगा कि आप जितना भी हो सके उसे प्रमोट करें। क्योंकि आप ये देखें, जितना आप लोगों को प्रमोट करेंगे, आपकी बुक लोगों के पास जाएगी, आप उस बुक के ऊपर आपका नाम होगा कि ये बंदे हैं इसके पब्लिशर। वो लोग भी फिर आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आप पहले ही एक राइटर आपके पास आए और आप उसको किताब वो 10,000 की हो और आप उसे 35,000 आप कह दें, तो ये मैं ये बात समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है इखलाकत तौर पर। और मियाँ वाली में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मियाँ वाली के लोगों को आगे आना चाहिए। और बस यही मैं कहना चाहूँगा इमरान भाई। अच्छा अब्दुल मनान भाई, आप रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आप कैमरा की जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए मौखर करें। कैमरा की खिदमत मैं सर अंजाम देता हूँ, आप जो है ना सर से मज़ीद जो है सवालात करें और इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखें जी। Thank you so much. Yeah, Manan here. So, here are this my first question is that which things took you to write this book? I will request you to please speak English for your students. That actually this is a book in English, so I will request you to please answer this question in English. Well, your question is which thing is required to write a book. Well, the thing is, when you ask this question to a poet or a writer, then he will give you only one answer, and the answer will be in just one word, and that word is inspiration. You know, when you walk, when you go outside of your home, and also when you meet people, I believe that in each and every poet present in this world has some sort of inspiration. And if you ask me about what is your inspiration, then I will give you my answer in a simple word that my inspiration is nature. You know, when I see birds hiding among the trees, when I see a bird flying in the rain, and when I see moon appearing and then hiding behind the clouds, and you know, these things really inspire me. And I believe that while witnessing these incidents, I feel the presence of some unseen power.
around me, and that power really inspired me to write this book. And still this power is present around me, and this power is the reason why I have been able to write this book. And I believe that uh, your answer, your question, sorry, will be answered in a simple word. The thing required or the main ingredient to write a book is inspiration. Now, how you will get inspiration or from where you will get your inspiration, now it totally depends on the writer, it totally depends on the poet who is writing or who is composing a poem or who is creating a book. So it is totally on that person. Okay, thank you. And my next question will be about your book. And I have read this book. It is a very interesting and I will say a very good book, very nice creation by you. And my question about the book is the character in the book was Andy Johnson. He's a teacher. And I will ask you this question, and I'm very eager to ask this question to you that which teacher inspired you for this, make this character? And I cannot see this type of teacher in our society or around here and there. I cannot imagine this teacher. Which teacher you have portrayed in your book? Please explain this character. Well, if you talk about the teacher Andy Johnson, then again I will say I will give your answer in a simple way that Andy Johnson is actually my own self. I actually portrayed my own self in that character Andy Johnson, and I believe that when you are teaching in a classroom, when you are imparting knowledge and when you are delivering your knowledge to the students, then you must have some sort of uniqueness in you. And I believe that that uniqueness really separates you from the other teachers. Each and every teacher present in this world has its own method of teaching, and when I teach in the classroom, I mostly give them examples. And you see, when you will read the book A Girl with a Black Umbrella, in the opening chapter you will see Andy Johnson is giving them, is again narrating a story. If you will go to the last chapter is the return, chapter number 12. Again, he is telling them the story of a bird that has come from the heaven, and now that bird entered this world, and when that bird saw that there is so much envy birds are present, jealous birds are present around him, so angels are coming, and then angels are taking that bird back to the heaven. So I believe that telling a story or narrating a story, and by comparing things and giving them examples to the student, I believe that this is the right method. According to me, this is the right method of teaching. You know, you are also teaching in a school, Alam's High School, very distinguished and very prominent school in district Miawali. So again, you will have your own method of teaching. So this is my own way of teaching in the classroom. I usually give them examples. So I believe that this character Andy Johnson totally portrayed my own self. Thank you so much, sir. And if we see the character of Andy Johnson, he is a perfect teacher. And if our teachers of our society attracts him, his personality, they must choose him as their ideal. It will be, our education will get better. So my next question to you is that in your book you have portrayed the scenery and the beauty of the nature. And as I know that you have never went to the area of East Shire, and you have portrayed that area. What was your inspiration for that art? It was very beautifully portrayed, and it was very nice creation. So please tell us. Well, your question is about the scenery, that how I have described the scenery in book East Shire. So my answer is that I totally created and described each and everything by closing my eyes, and I had visualized, or I had made a picture in my own mind that I was actually present there, and I was watching each and everything with my own eyes. I know that I was not present there. I know that I had never seen a thing like that, the thing like East Shire. So I was present
I was not present there. So actually, I was present there just because of my imaginative eye. And one more thing, as I'm teaching in Superior College, Mia Wali. So in the month of March, we usually have a tour. We usually go to Murray, but this year we have gone to Kashmir. So when our bus was moving on the road, so what I did at that time, that I was sitting on the front seat and I had the mobile in my pocket, so I took it out and I was writing each and everything that I was watching at that time, because I believe that Kashmir is a second picture of East Shire. So at that time, two or three people were standing just beside the road, and they were waiting for the mechanic. They were waiting for the mechanic because I know that their car was stopped at that time. So what I did at that time, that I totally wrote each and everything on my mobile phone. And one more thing I had seen at that time, there was a bridge and few birds were sitting on the wires, and few birds were flying under the bridge, and later on they were flying over the bridge. So whatever I was watching at that time, I totally wrote it each and everything. So when I was writing this book, so I totally put each and everything that I had seen over there. I had put it each and everything in this book. So this is how I describe the scenery. I had described, I have already explained that I did not go there. I have never seen anything like East Shire, but I was watching each and everything with my imaginative eye. So I have this picture in my mind when I was writing the scenery of East Shire. Thank you so much. And now I will come to the point which is concerned with is that I will ask you a question, that why nowadays students are very in lack with the creativity. They do not know about the creativity and they are not able to write things. We know students, they are graduates, they are studying in universities, but they do not know how to write. And what you will suggest them if they want to become a good penman or a good writer or a wordsmith? What would be your advice for them? Please advise them in a decent way. Okay. Well, my advice to all the students who want to write something, who want to create something, my advice to them is that please do not go, on cramming. When you will understand something, when you will have a command on the language, and the main thing is that when you will feel something. I mean, writing is not simple. When we will deliver the lecture in the classroom, that creative writing has this advantage, creative writing has that advantage. Students, they will just listen. They will not implement the things that you are talking about. So the main thing is that a student must have an interest in creative writing. And I believe that why the Indian students are so brilliant, why they are so bright, because I believe they have this sort of idea in their mind that in the modern world, if you want to progress, if you want to succeed, you have to have a command on the English language. And unfortunately, I do not want to say that I believe that students are some sort of reluctant in writing English, because they believe that they have this sort of fear in themselves that when they will write, they will totally messed up thing, they will totally write the wrong thing. And then the biggest problem that I feel, that they have this apprehension or fear in themselves that people will laugh at them. I think you have to remove this idea from the mind of the student, that write whatever you feel, write whatever you want. You will make mistakes,
But this world, in this world, you learn from your mistakes. Take guidance from your teachers, and teachers are the ones. I believe that they have the responsibility to teach the students what is right for them and what sort of thing they should stop. So my answer to your question is that first of all, a student has to make or has to build an interest in himself for writing something, for writing something beautiful, something creative. A student has to have interest. And the next main thing, a teacher has to be honest in guiding the student what is good for him and what is not good for him. Okay. My next question is related to the last question, that what is the role of appreciation in creativity? Well, I know, in my opinion, that we are very backward in this regard, that we do not appreciate people. Most of the writers, most of the talented people die with their talent, and we do not know about them, how to appreciate them. And what you will say that what type of appreciation you received from the people of Miawali after writing your first book and after writing your second book, and what you will say about for the next people who want to write, and what would you advise to the people that how should they appreciate other students and other the writers who are creative in their talent? Well, as I have already mentioned, that appreciation is very necessary for anything. If we are present over here, then I would like to say thanks to Khayal Academy. I would like to say thanks to Imran Hafiz. I would like to say thanks to Miawali hometown page. I would like to say thanks to Samar Abbas. I would like to say thanks to Faizan. Appreciation is very necessary. How can you work without appreciation? I mean, I have already mentioned that if a student has written a poem and a student has created a story, then if he comes to you and if he is taking a paper, if he has a paper in his hand and if he comes to you, then I believe that it is the responsibility of the person who is checking the poem, who is checking the story. He has to appreciate him, because I believe that I have seen a teacher in my own life. One day a student was telling me that he had written a poem. He had brought that poem to a teacher, and he had requested the teacher to please check is there any mistake present in it. So just look at the reply of the teacher. He replied that you have get a print from the computer and then put it in your bag and never open this poem. I mean, just look at the response of the teacher. I mean, if a student has created a poem, a student has written a poem, so I believe that a teacher has to appreciate him. And next thing is, as I have already mentioned, that if a painter paints a painting, if a musician creates a symphony, so there is no reward for him. In this world, there is absolutely no reward for an art, because art is a gift, and this gift is given to him by the Almighty. And when a gift is given to you by the Almighty, then there is absolutely no prize, there is absolutely no money that this world can give that person. I believe that there is absolutely no reward for the person. So the biggest reward is that we have to appreciate the student, we have to appreciate the writer. So in this way, I believe that this is the big reward and this is the big appreciation that a poet can get from the people. At the end, I would like to say thanks to the people who have appreciated my book, A Girl with a Black Umbrella. I would like to say thanks to all the students of Superior College Miawali. Thank you so much, my sons and my daughters. Thank you so much to Muhammad Iqbal Shah. Thank you so much to Sir Nadeem Alam. You are my mentor, you are my idol. And thank you so much to Mujahid Mannan. Thank you so much to Sir Gul Hamid. And also thank you so much to all the
beliefs that I have in Superior College Miawali. And thank you so much to my friend. Actually, he was not my friend. He was my class fellow. Then we became friends, and then we became brothers. I would like to say thanks to Sir Abdul Hamid. He is the head of English department in Xavier College, Miawali. Thank you so much to Malik, Ravid, Hassan, MPhil Geophysics. Thank you so much to Jahazeb, Sir Syed School and College. He is a teacher over there. And thank you so much to Imran Hafiz. Thank you so much. And thank you so much to Miawali hometown page. Okay, thank you so much, everyone. And, as we know that interview has come to its end, and by the message of this interview is just that we are celebrating this month as a month of appreciation. My message to you people and Saratif's message will be the same, that we must appreciate things. We must appreciate people around us if they are doing something good. Appreciation is not just to say that you are doing a good work. Appreciation is actually to support them in all regards. Support them, help them, and appreciate them in this regard. So now I will request, my friends are there, they will ask some questions to Atif Ali. First of all, I will move to Chadeb. Please go on. सर, इस किताब के शुरू में आपने कुछ कहानियों का नाम लिया है, जैसे कि हैरी पॉटर, नार्निया वगैरह. क्या आप इनसे मुतासिर हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल. मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था. द लॉर्ड ऑफ द रिंग जो फिल्म ट्रिलॉजी आई है, और सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड था ब्यूटी एंड द बीस्ट. और क्योंकि आप ये देखिए, ये जो जितनी भी फिल्म्स थी, ख़ास तौर पे ये जो हॉबिट फिल्म है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग, की बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है. और जो चीज़ें ये मेंशन करते हैं उसमें ऑर्क्स आ जाते हैं. और अब इतनी खूबसूरत ये फिल्म्स हैं, बनाने वाले बहुत ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड इन फिल्म्स को मिल चुके हैं. ब्यूटी एंड द बीस्ट बहुत खूबसूरत कहानी. तो मैं इन जब फिल्म्स को देखता था, तो मैंने जैसे प्रेफेस में ये बात मेंशन भी की है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या मैं भी इस तरह की कोई चीज़ लिख सकता हूँ. मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल किया करता था कि जब अमेरिकन राइटर्स इस तरह की कोई चीज़ लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, तो क्या मैं भी इस तरह की कोई चीज़ लिख सकता हूँ. तो तब मैंने अपने आप को खुद चैलेंज किया, और फिर मैंने ये बुक लिखी, अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला. First of all, sir, I will appreciate you. You are definitely a pride of our society and our generation. And you have proved that we don't lack talent, we just lack courage. My question is that, sir, you have written short story, you have included poems in it, you have copied some verses from Shakespeare. So which is your favorite discipline, actually, poetry or novel, or what you say, short story? Well, I'm a half poet and I'm a half writer. The simple answer to your question, I have included the lines from Romeo and Juliet. I have included the lines from Valentine's speech from the two gentlemen of Verona. I had once read these lines in some book, and I was very much delighted by the way William Shakespeare had written these lines. I mean, there was a line that there is no music in the nightingale if I don't see my beloved in the morning. I mean, वो कहता है कि बुलबुल में कोई म्यूज़िक ही नहीं है जब मैं अपने महबूब को सुबह के टाइम देखता नहीं हूँ. I mean, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था इस तरह की लाइन से, और मैं ये चाहता था कि अब मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने ये लाइंस पढ़ी तो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में ये बात आई कि क्या ये इंक्लूड हो सकती है बुक में, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लाइन. और रोमियो एंड जूलियट, वी हैव सो मैनी लव स्टोरीज, वी हैव वी रांझा एंड सत्सी पूनू एंड ऑल.
Romeo and Juliet is one of the best love stories ever written by a human being. So this is also a magical love tale, a girl with a black umbrella. So I wanted to include the lines from the famous love story ever written by a human being. So that is why I have included these lines, because the story starts with the line from Romeo and Juliet. The teacher is teaching these lines in the classroom, and then the whole context and then the rest of the story actually begins. So I'm really inspired from William Shakespeare, and also I'm a half poet, I'm a half writer. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल का दौर जो है टेक्नोलॉजी के दौर है, तो इसमें जो है आजकल का जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमने जो है कैसे नौजवानों के अंदर शऊर पैदा करना है कि हम रीडिंग करें बुक्स की, और इसके अलावा कितने पेजेस की हमें बुक लिखनी चाहिए ताकि एक बच्चा जो है आसानी से पढ़ सके। वेल थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब्दुल हमीद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज की टेक्नोलॉजी का वाकई में उसको हम बात को झुटला नहीं सकते कि आजकल है टेक्नोलॉजी का दौर, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि वो जो बुक रीडिंग थी, एक आदमी बैठा है, वो धूप में किताब सामने रख कर और उसकी एक टांग हिल रही है और वो किताब पढ़ रहा है और अपने जहन में एक पिक्चर बना रहा है कि कैसा नज़ारा होगा वहाँ पर। आजकल आप ये देखें इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ गई हैं, आपके मोबाइल में बहुत सारी बुक्स लेकिन वो जो बुक रीडिंग है उसका टेस्ट ही अलग है। और जहाँ तक बात है, आपने पेजेस की बात की है, तो एक दौर था जब विक्टोरियन दौर था इंग्लिश लिटरेचर में, राइटर्स जो थे वो 300 से लेकर 800 पेजेस के लंबे नावल्स लिखा करते थे। तो आजकल जब मैं ये बुक लिख रहा था तो आप ये देखें ये बुक की जो स्टोरी है ये ख़त्म हो गई है 60 पेजेस पे जाके। तो मेरे जहन में ये बात थी कि वही आप बुक लिखें। जब आज के मॉडर्न दौर में एक बंदा अगर जाता है दुकान पे, वो जब किताब को उठाता है वो सबसे पहले देखता ही ये है कि इसके पेजेस कितने हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं है पढ़ने का। तो मैं ये जानबूझ के मैंने अपनी स्टोरी ख़त्म की है 62 पेजेस पर, वो इसलिए कि जब कोई जाएगा शॉप में, जब वो बुक को उठाएगा और जब वो देखेगा कि वाह इसके तो सिर्फ 62 पेजेस हैं, ये तो अभी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में या 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो कम अज़ कम वो जो रीडर है वो किताब को पढ़ने का एक दफ़ा सोचेगा तो सही। पढ़ना ठीक है, आजकल ये बहुत ही बदकिस्मती है कि स्टूडेंट्स और जो रीडर्स हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं, लोगों को पढ़ने का इतना शौक़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये बात समझता हूँ कि आपने किसी न किसी तरीके उनका इंटरेस्ट जो है रीडिंग में वो आपने किसी न किसी तरीके स्टार्ट करना है। और अगर आप बहुत लंबी स्टोरीज़ पे चले जाते हैं 300 पेजेस पर, और जैसे विक्टोरियन दौर में होता था, तो मुझे शायद ये बात लगता है कि लोग इतना इंटरेस्ट के साथ उसे नहीं पढ़ेंगे। ये बुक इसलिए इतनी फेमस हो गई क्योंकि लोग ये बात समझते थे कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हम पढ़ लेंगे, और ये वाकई में ही 1.5 घंटे में ये बुक ख़त्म हो जाती है। Sir, it is said that if you want to write, you must read. You would have read all things, a lot of things. And Francis Bacon said that some books are to be tasted, others to be swallowed, and others to be digested. So, according to you, which books do you like? I mean, which books do you like are to be digested? In other words, I want to ask that who is your inspiration in literature? As I have already said that my inspiration is William Shakespeare, and I also like the poet William Wordsworth. He is a lover and worshipper of nature, and I'm also a great admirer of nature. So my inspiration is William Wordsworth, my inspiration is William Shakespeare,
But I will, as you have asked, that what sort of books are required for a writer to read. So, well, I believe that for reading, you, we cannot mention a specific book that this book is good for you to read it, this book is best for you to read. I do not believe in this sort of thing. I believe that you have to observe things and you have to feel things, and when you do this sort of thing, then you will become a perfect writer. As I have given so many times this example that I have already given this example in a sermon, that one day I was sleeping, and when I got up in the morning, it was actually very heavy rainfall last night. So when I went out, so I saw a flag that was trying to fly, and then it fell down, trying to fly, and then it fell down. So at that time I made a simile that I want to help you, but I'm as helpless as a wet flag is after rain. So you see, I observe things, and then I write. A few days back, I was sitting in my village. I live in a village, so at that time, few children were playing cricket, and a batsman has played a superb shot, and then the ball was lost in the grass. At that time, I was thinking a simile. I wrote a simile at that time that right now I'm so confused. I'm just a lost ball in the grass right now. So I had seen that incident, I was observing that incident, and I was creating. So I create things in this way. I observe things and I make similes and metaphors just from the normal day life. So this is my view and this is my point. Observation is very necessary for a writer. First of all, I really appreciate you for this book, and I read this book. It is only about imagination and simile, and I think whenever anybody reads it, it lost itself in the world of imagination. And I always heard that when we think about poet or poetry or imagination, that there was really a story of love story and kind of a heart story. And you have any kind of that kind of story which inspired you in writing of imagination and love story? Love story that inspired me to write A Girl with a Black Umbrella. This is your question. So, no, I haven't read any love story. I haven't read anything like this. I have read so many love tales. I have read so many. I have listened so many love tales. I have read and I have seen so many love tales in the books. But I believe that when I was writing, so I did not have any love story in my mind. I had only one thing: to go from the real world to supernatural world, and this travel has to be so convincing that a reader must not feel at any point that the writer is deceiving us. मैं नहीं चाहता था कि रीडर जो है वो किसी मौके पर ये सोचें कि ये जो राइटर है ये हमें धोखा दे रहा है। मैंने उन्हें जानबूझकर रियल वर्ल्ड से एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना था जहाँ पर जो और स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाकई में ये कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको सारी स्टोरी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर स्टोरी बता दी तो शायद वो उसमें टेस्ट ना रहे। तो मैं ये चाहता
जितने भी ये लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद इसको रीड करें और ख़ुद वो अपने आप को महसूस करें कि वो इस कहानी का हिस्सा हैं। एंडी जॉनसन का करैक्टर और रोज़ डॉरिंग का करैक्टर, वो ऐसे समझें कि ये हमारे आसपास ही ये लोग ऐसे मौजूद हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन लोगों का जीने वाले लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर है। और यही मैसेज मैं अपनी बुक के ज़रिए कन्वे भी करना चाहता था कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनका कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई ख्याल बाकी पीछे ज़रूर रह जाता है। Thank you so much, Adif Ali, that came here to give us this interview. And now Adif Ali has a gift for his readers. He will tell you about his new coming book and revised edition of his last book. I will request him to please tell himself to his readers when it's coming. Well, we have a plan of the second edition of this book, and we will include the reviews of the famous poets of Miawali who have read this book, and also I have included the review of Dr. Safiya. She is teaching in India. She is a professor in Women University, but now I would like to include the views and reviews of the Pakistani or Miawali poets, and also there was my first book was Cano and the Raven. So I believe that there is some sort of confusion regarding the title. There is some sort of confusion regarding the main characters, that people usually do not pronounce these words Cano, they pronounce it Kanno and the things like this. So there is a lot of problem that I'm facing regarding my first book. So I have a plan to change quite a few things, and our next edition is coming inshallah in round about 3 to 4 months. After 3 to 4 months we will have a new edition, and we have a plan of arranging a ceremony in Lahore, in Islamabad. Now we have arranged the ceremony in Miawali, and Alhamdulillah it was a magnificent ceremony, it was a splendid ceremony. But we have in our pipeline the ceremony that we will conduct in Lahore and Islamabad. I want to convey my message to the whole world, and I believe that when you will go outside Miawali, then this is the only way through which I believe that I can convey my message to the whole world. So my plan is that we will have a next edition in round about 3 to 4 months, and then after that we will arrange a ceremony in a bigger city like Islamabad, Lahore, and we will invite all the major poets and all the major writers of Pakistan, so that they should know that we Miawalians can do what they are doing. We can do much better than them, or we can compare, we can go to their level as well. So my mission is this, and if my थैंक यू सो मच सर। हम बहुत बेसब्री से आपकी नई आने वाली किताब और नए एडिशन का इंतजार करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम द आवर साइड, एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन Miawali hometown page, presented by Samar Bas, Imran Hafiz and Fizan, and let's call it a day. Thank you so much everyone.